आप पीछे कैन समन प्लीज मेंटेन साइलेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फोकस. थैंक यू, थैंक यू. जी, सबसे पहले मैं आप लोग को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है। आप तीनों से मेरा सवाल है, हर्ष पहले आप जवाब दें। आप, निकिता और अहान, आप लोग कॉलेज में कैसे थे? कितने जुनूनी थे? कितने कंस्ट्रक्टिव थे? कितने डिस्ट्रक्टिव थे? कैसा रहा आप लोगों का टाइम? या एकदम सीधे साधे थे? मुझे इस सवाल से बाहर रखिए, मैंने कॉलेज नहीं किया है गाइस। ये सवाल मैं कॉलेज में अभी जब हम गए थे इवेंट के लिए वहाँ भी अवॉइड करके आया हूँ बड़ी मुश्किल से, पर देखा जी आपको ये पूछना था. थैंक यू. मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि अहान से भी और निकिता से भी कि बहुत क्या होता है कि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि आप सोचते हैं कि वहाँ पर आपको वो एज में आपको सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अच्छा भी करना है, बुरा भी करना है, लेकिन वहीं से ही आपके आगे का जो एक होता है वो रास्ता एक अख्तियार होता है, वहीं से फॉर्मेटिंग ईयर्स वही होते हैं. सही बात जी. है जी, बिल्कुल सही. बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई थिंक एक चीज और होती है, जब आप कॉलेज में होते हैं आप समझते हैं कि आप सबसे ज्यादा समझदार इंसान हैं. जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही है. वो आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा कि हर इंसान सोच रहा है मैं सही हूँ, मैं एकदम करेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है. तो एक बहुत ही एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट का यही एटीट्यूड होता है. एंड मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ. जब कॉलेज में थी आई यूज्ड टू थिंक आई एम डूइंग द राइट थिंग इन द वर्ल्ड, आई एवरीथिंग आई डू इज करेक्ट. तो उसके साथ ही लेकिन क्या होता है कि आपकी जो जिंदगी की पहली सीख होती है वो आपको इसी दौरान मिलती है. एंड दैट काइंड ऑफ डिसाइड्स योर फ्यूचर एज यू करेक्टली सेड. एंड अहान आप? जी सवाल क्या? कॉलेज में हाउ वाज कितने योर कॉलेज लाइफ यार? कॉलेज में कैसा था? कॉलेज लाइफ अच्छी थी. मतलब अच्छी ऐसी कटी. थी या कुछ और थी? ऐसी है नहीं ऐसी ऐसी नहीं. लफड़े वाली नहीं थी. लफड़े वाली नहीं थी. वाज अ बिजनेस स्टूडेंट. एंड हर्ष सो इहान का काउंटर पार्ट है कालिदास. कालिदास ने तमिल में इहान का पार्ट किया है और संचना ने निकिता का पार्ट तमिल में किया है. तो आप ये सवाल इनके लिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ये कॉलेज में बहुत बड़े राउडी थे. ये दिखने में, हाँ, दिखने में ऐसे बहुत स्वीट सिंपल लगते हैं, लेकिन ये कॉलेज में बहुत बड़े राउडी जयराम. राउडी जयराम. राउडी जरा. राउडी जयराम. और संचना भी कुछ कम नहीं थी. संचना भी काफी कॉलेज Jairam is his father. But he's Kalidas Jairam. Sorry, Jairam uncle. योर कॉलेज लाइफ. I did my college in Loyola, Chennai, but I never went to class. I spent most of my time in theaters watching movies, but yeah, I at least got to play a student in the movie, so I'd like to thank Vijay sir for that. And yeah, like Actually, even in the film, you're bunking lectures. yeah, so that's called method acting. So Kalidas, your name is Kalidas, or you really write also? No, just a name. It's just a name. Okay. Now, Vijay, you're known for your music. So what kind of music we can expect from this? So this, it's always been part of my narrative. Okay, sorry. So music has always been part of my story narrative, and this film is no different. This film actually, the album has about 4-5 songs, but the film has about 14 songs as part of the structure. So I've used a lot of music, and because the film is for the young adult audience, I tried to make it more accessible for them. So be it the way we have shot it, be it the way we have scored it, be it the way the kind of songs we have accumulated for the film, it is to try and connect to them the most. So I've tried that. हर्ष से मेरा एक खास सवाल है. हर्ष, आपकी फिटनेस, आपका बंजारापन, आपका जो ये पूरा एटीट्यूड है, वो आपके इस रोल के लिए कितना काम आया? क्योंकि एक कॉलेज के लड़के का रोल है, तो वो जो आपकी जो पर्सनल लाइफ में जिस तरह से आप एक घुमक्कड़ी करते रहते हैं, जिस तरह से आप अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान देते हैं, वो कितना काम आया, कितना वर्क किया इसमें? मुझे कई बार ये लगता है कि मैं जो घर से भागा था एक्टर बनने के लिए, तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट से मुझे एक अलग तरह से जीने का मौका मिला. सो आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, बट जो भी घर से भागे हुए होते हैं वो थोड़े फ्री होते हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन दैट. ये सब घुमक्कड़पन, थैंक यू, ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं फील होता है, और आई होप विजय सर के काम आया हो इसमें से कोई क्वालिटीज़. बट एक चीज़ जो मैंने लास्ट ईयर करी है, क्योंकि वो जो एम्बेरसमेंट है वो कॉलेज वाली, लास्ट ईयर मैंने
साइकोलॉजी ऑनर्स में बीए भरा है, तो मेरा वो माशाल्लाह। पहला क्या बात है, तो मेरा After the film, he did that. वाह, great. दैट्स लास्ट ईयर लाइक जून में मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स है और मैं रोज 3.5-4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ. तो ये मेथड एकदम मेथड हुई. कोई नहीं, मैं भी एमए कर रही हूँ. आप अरे वाह. सो ज़्यादातर उल्टा होता है, लोग पहले काम करते फिर फिल्म करते. मैं उल्टा हो गया मेरे साथ. मैंने पहले फिल्म करी और फिर मैं उसकी अब रिसर्च कर रहा हूँ. Kalidas, Vijay, आपसे जानना चाहेंगे, why not you continue with the same cast in the other language? So this is something I was very clear on right at the beginning, that I know it's very easy. Last couple of years we've seen that कि हम फिल्म को एक लैंग्वेज में बनाते हैं, we just dub it in all languages. And अभी आप कोई भी OTT में चले जाओ, आप फिल्म लोगे तो आप you can choose the language you can watch it in. So it's become very easy for audiences to choose. But I wanted to kind of try and go back and try and be as pure as possible, as authentic as possible to the language that I am trying to tell the story in. So this story is set in a college which is very universal, very resonates with students from all over the country. So I saw an opportunity to try and do this film for the Hindi audience and for the Tamil audience. मैं चाहे तो एक और लैंग्वेज भी कर सकता था, बट मैंने सोचा चलो 2 ले लेता हूँ. सीरियसली. बट वो 2 जो मैंने उठाया तो मैंने बोला कि let's try and be, I know vanity man क्या होता था. Let's try and be as authentic as possible to the segment that we are catering to. So which is why we cast people from the Tamil industry for the Tamil audience. We cast Harsh, Nikita, Ehan for the Hindi audience, to try and stay as authentic as possible, so the audiences get to experience it in the purest way that we were trying to tell the story. Kalidas, आपसे हिंदी चलेगी? थोड़ा थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि साउथ की बहुत सारी फिल्में बहुत वाइडली और ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट की जा रही है. अब जब आप यहाँ आते हैं, कितना अंतर पाते हैं? क्या आपने कोई अंतर महसूस किया? क्या आपने ज़्यादा लोग ओपन हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करें, ये महसूस किया? No, so I've played the part in the Tamil version. Now you're here, so Yeah, I mean, see, it's always been a dream. Like, I've seen like movies that T-series have made, and like I've been a huge fan of Bijoy sir. Like, especially after David, like I've always wanted to work with him. And David was like one among the lot of movies that I bunked class to watch. So it's a very surreal feeling to be part of this movie, playing the lead. And so Harsh's character in Tamil is played by Arjun Das. So he couldn't make it today. And yeah, like you said, I think audiences everywhere, they are like evolving, and I feel like the barrier is broken. Like this actor should do movies only in this language. I think that barrier is no longer there. Like, people from South are doing movies in Hindi. Like Hindi actors are doing movies in South. So I think that's not there. It's all about like choosing the right content, and I think as actors we also have a sense of social responsibility, and I make sure that like I'm whatever little bit political correctness that I think I have, so that's how I choose my movies. So इन्होंने आपको बिल्कुल आपने इनको कुछ रैगिंग वैगिंग किया या नहीं किया? ये उल्टा है. No, it was the other way around. It was the other way Tell me around. something more about it. The one who's He's actually the one who's ragged everybody the most. No. सबसे ज़्यादा. Yeah, सबसे ज़्यादा इन्होंने सबको रैग किया है. This will be the headlines tomorrow. Ehan and Harsh, of course, आप लोग ने एक्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन किया इस फिल्म में, और किस तरह का एक्शन हमें देखने का मौका मिला? हर्ष बताएगा ईहान के एक्शन के बारे में. हर्ष बार बार मुझे आके बोलता था, सर ईहान का जूता यहाँ छप गया है मेरे यहाँ, छप गया. एक बिजॉय सर की बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. म्यूज़िक के सेंस तो उनका बहुत स्ट्रांग है. एक्शन कई बार मैंने उनको पकड़ा है खुद कोरियोग्राफ करते हुए और खुद इन्वॉल्व रहते हुए, खुद मतलब विद द एक्शन कोरियोग्राफर्स. और मुझे बहुत शक है कि वो कॉलेज में ऐसे ही थे, वो बताते नहीं. और मैंने सर के दोस्तों से भी इंक्वायर किया है. कई एक दोस्त आए थे इनके यूएस से, मैं उनको साइड में ले जाके पूछा था, सर ऐसे ही थे क्या? क्योंकि टैश में भी जो रेज उन्होंने पोर्ट्रे किया, तो मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन सही मिल नहीं पाई है. बट ऑल दैट कम्स फ्रॉम हिम, और हमें फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज ही डिज़ाइंस इट इन अ वेरी ही डिज़ाइंस इट विद इमोशन. वो कभी भी विजुअल पे एक्शन नहीं करते कि ऐसा मारना वैसा, कि क्या फील कर रहे हो आप उस समय वैसे मारना.
तो इनके एक्शन में हमेशा इट्स बैक्ड बाय इमोशन. I can safely say all of them, Arjun, Kali, Ehan, Harsh, even the women, TJ, Nikita so had a small accident also on set with the action. Arjun broke his teeth. Broke his teeth. I didn't break his teeth. So we had a lot of mishaps, and only because we were trying to make the action look as organic and raw and real, and also the action was just not, as you can see in the trailer also, it was just not about them in the action. You could see there were like almost 100-200 extras who were also part of the action. So दंगे थी, riot था, तो हमको वो we had to portray it as authentic as possible. तो उसमें कितना भी आप रिहर्स कर लो, कितना भी आप बैकग्राउंड एक्टर्स को बोलो कि ऐसा करना है, कोई ना कोई आके इनको टकराता था और they used to give it back to them also. So all that happened a lot, and luckily on the last day of the shoot is when one of the out of a crowd of 700 people, the firework went and landed exactly on Nikita's. Right here. I still have the mark. It was a proper burn that happened. Luckily, it was on like the second last day of shoot. Second last or last day, I think. Second last, because I had to come the next day. Also, she was fully covered. Her Yeah. t-shirt had a collar. Still, it kind of. Band-aid and stuff like that. But I don't know. I feel like it was, even though, I mean, burn hua tha, acha khasa, it was a proper third degree burn that I Firework had. actually came and landed on her. And because we were taking a one shot, I still remember, जब तक कैमरा मेरे ऊपर आया तब तक ऑलरेडी फायर क्रैकर लैंड हो चुका था, उसको 1 मिनट हो चुका था. आई वॉज येलिंग एंड क्राइंग, एंड बिकॉज देयर वाज सो मच क्राउड एंड नॉइज, nobody knew about it. So by the time these guys actually came to me, they didn't understand, am I acting, has something happened, because I was just jumping with pain. So then हमें लगा क्या बढ़िया एक्टिंग. then finally